Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today, a notification of IDBI, Postgraduate Diploma in Banking and Finance, and Executive came. There are so many details in that notification, and it will require time to study all the aspects. But as and when some notification comes, excitement also comes. Initially, I wanted to make this video in the evening, but many of you are insisting that, sir, answer my question, answer my question. So I am taking few aspects that is relevant in this video, and as soon as we will gather more questions from you, I will make one more video on this topic. Then as far as preparation is concerned, already we are running two timetables, one for clerical cadre, one for officer cadre. You can follow the same. That is, the similar type of preparation is required for IDBI Executive and Postgraduate Diploma course in Banking. To mock test service provider, I have requested to provide mock test for IDBI exclusive also. So very soon we will have clarity on this. You can click the link, register, take annual plan along with banking sectional mock test, apply coupon code AA03 to have 10% off. In the annual plan, these will be added. And the candidates, those want to take additional or only IDBI, they can also avail. But this I will make it clear in few days. But you can go for this because they will be providing these mock tests. Now, what are the salient features in the notification? First is online registration starts on 3rd June and this will go up to 17th of June 2022. First is opening day, closing day. Second important aspect this time is it is a combined notification. In earlier years, IDBI were used to have separate notifications, so candidates were used to fill for both the vacancies, for executive also and for postgraduate diploma course in banking also. So this time they have categorically mentioned apply for only one post. So you have to pick either of these two. I think this is to avoid multiple selections, because in earlier occasion what was happening that a candidate is first joining executive, then he gets selected for postgraduate, then he resigns, and a lot of confusion was there, and that is harming the selection of others. But at the same time you will get only one chance, that is disadvantage also, because it is very difficult to pick whether you want to go for executive or postgraduate diploma course in banking, because it is your choice, but still it is sometimes difficult. But anyhow, allowing in one job means the level of competition will fall. So instead of having these separate vacancies, one can assume that now this is the aggregate vacancies that is available to us. So to that extent, it is good for the candidates that their chances of selection will improve. Second thing is, although these vacancies are not very robust, but this is only one organization vacancies, they are very less, but still the chances of selection is high because many candidates may not be applying for this job, and that makes the competition easy as compared to IBPS or SBI. So the candidates, those are unable to crack SBI PO or IBPS PO, and they want to become bank officer, this is a good opportunity. But at the same time, whether you should apply or not will depend upon your own wisdom. Because normally I neither say don't apply and nor I say apply, because I leave it to your wisdom. Because there are certain plus point of this organization and there are some fears also in the mind of candidates. The plus point is it is a good organization, offering good salary package,
are giving good promotional avenues, and already videos on the salary structure of IDBI and the opportunities to grow is already available on this channel. You can go through those videos. So you can easily search this. These are available on this. I will try to place some video links in the description also, and I will try that also. Now, or I will make a playlist for IDBI separate where I will place these, and I will give you the playlist link. That will help you more. Now the question arises whether I should apply or not. I have already made it very clear, you have to take your own decision. I am neither recommending nor saying don't apply. People are happy working in IDBI. Some people are unhappy also, and that is happening everywhere in banking. So you have to take your own call. If you are looking for a job, this is a good opportunity to think in these terms. Then comes the qualification. So there is a major change in qualification. The earlier years there was used to be percentage criteria. 60% minimum was required for postgraduate diploma course in banking. This year they have removed. So now the educational qualification is same, either you apply for executive or postgraduate diploma course in banking, but the cutoff date is 1st April 2022. That means your age will be reckoned as at 1st April 2022. Similarly, your qualification will also be reckoned as at 1st April 2022. That means the candidates, those are already graduate on 1st April, can only apply. Again, here is age criteria also. In age criteria, we will see for executive, the age minimum is 20 years, maximum is 25 years. So less than IBPS clerk. Then for postgraduate diploma course, it is 21 years minimum, maximum 28. So many candidates, those are eligible for IBPS, may not be eligible here. So that will also reduce the competition. So competition here is less. But for executive, there is not full scale. Although it is a clerical post, the executives will get 29,000 rupees consolidated salary in the first year, second year 31,000, third year 34,000. So this is to be looked into, that the salaries are consolidated, not the pay scale. Now the question comes, it is a contractual job for 3 years. What will happen after 3 years? For that also there is a video on this channel, you can watch that video. Generally in IDBI, after completion of 3 years, the candidates are given an option to become assistant manager, and most of the executives become assistant manager. So they are not retrenched, they become the assistant manager. And the people, those are unable to become assistant manager, they are given extension also. So some people are having fear that what will happen after 3 years. To that extent, there is not much of a worry, but yes, there is no certainty that person will continue, because they have taken you for 3 years, so that risk always remains. The risk always remains. Then for postgraduate diploma course in banking, you have to incur some expenses. But if you are selected for IBPS PO or SBI PO, these expenses are not there. Secondly, you start getting salary after completion of course. In IBPS PO and SBI PO, you start getting salary the day you join. So this is a disadvantage here. You have to wait for 1 year and you have to incur expenses for 1 year. And these expenses are course fee of 3.5 lakhs. But people may not be having this money, so they have provided loan facility. So to that extent, since this is involving the lodging and boarding also, so it seems to be within a range. Some people may afford, some people may not be able to afford. Then stipend is also there, but it is very nominal. 2,500 rupees for first 9 months and 10,000 rupees per month for next 3 months. After 1 year completion of your course, the candidates will automatically taken as assistant manager in the bank. And the salary structure is very good.
Salary structure of IDBI is very good. There is a video on that. You can go through that video. Then there is a service bond. That means you have to work at least for 3 years. And if you don't work for 3 years, quit, then you have to pay rupees 2 lakh rupees as bond money. So all these aspects you have to keep in mind. For unemployed youth, it is an opportunity. Now next question comes whether it is a public sector or private sector. So a lot of confusion is there. Still ownership lies with the government and LIC. So it is akin to public sector, and that's why reservation policy and everything is implemented here. But if we go by RBI classification, this is classified as private sector bank. And this is a bank which is shortlisted also, mentioned, name, a potential candidate for sell-off. So these risks are there. These are the factors there. You have to decide according to your liking. I have given you a brief crux of notification. We will be talking about more things in detail about the course, about the examination pattern later on. If you have any query, you can put in the comment column. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IDBI एग्जीक्यूटिव और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स का आज नोटिफिकेशन आया. उसके साथ आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए. हालांकि मैंने ये डिसाइड किया था आज शाम को ये वीडियो डालेंगे, पर निरंतर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी एंजाइटी है अभी बताइए, तो एक वीडियो ये मैं बना रहा हूँ. और इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो हम सप्लीमेंट्री वीडियो में कवर करेंगे. पहली चीज़ ये है कि कब से हम अप्लाई कर सकते हैं. 3 जून से. कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 17 जून से तक. अब इसके अंदर इस बार कुछ चेंजेस हैं जो पुराने नोटिफिकेशन से डिफरेंट है. पहले वर्षों के अंदर एग्जीक्यूटिव का अलग नोटिफिकेशन आता था और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग का अलग आता था. अब क्योंकि इसमें एक ही नोटिफिकेशन है तो इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है कि दोनों में से आप एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अभी आपको डिसाइड करना है मुझे क्लरिकल पोस्ट के लिए जाना है या ऑफिसर पोस्ट के लिए जाना है. ये तो डिसएडवांटेज हो गया. एडवांटेज क्या हो गया? क्योंकि अब कैंडिडेट बट जाएंगे, कुछ उसमें जाएंगे कुछ इसमें जाएंगे, तो उस एक्सटेंट तक कंपटीशन आसान हो जाएगा. अब वैकेंसी इसके अंदर हम देखेंगे 500 और 1044, तो देखने में कम लग रही हैं, बट अधिक इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं. तो जो कंपटीशन है यूजुअली IDBI में कम रहता है एज़ कम्पेयर टू IBPS PO क्लर्क और SBI PO और क्लर्क से. तो ये एक एडवांटेज होता है कि अगर हम पास नहीं कर पा रहे IBPS PO और SBI PO, तो एक ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बैंक में घुस सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं. मगर हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपकी अपनी विजडम पे है. इस तरह के एग्ज़ाम ना तो मैं रिकमेंड करता हूँ और ना मैं ये कहता हूँ मत अप्लाई करें. इसमें फ़ायदे भी हैं और रिस्क भी इन्वॉल्व है. दोनों चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. अब इसके अंदर पहली चीज़ ये है कि एज का क्या कट ऑफ है, क्वालिफिकेशन का क्या कट ऑफ है. एज देखी जाएगी 1 अप्रैल 2022 को. तो इसमें एग्जीक्यूटिव में रखी है इन्होंने मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल. IBPS क्लर्क से कम है. इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस में मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम है 28 साल. ये भी उससे कम है IBPS PO और SBI PO से. क्वालिफिकेशन भी आपको 1 अप्रैल को देखी जाएगी. तो इसलिए जो लोग पढ़ रहे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया वो एलिजिबल नहीं है. ये काफ़ी क्वेरी होती है कि सर मैं 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं है. तो इन्होंने क्लियर कर दिया जिनकी 1 अप्रैल 2022 को जिनके पास डिग्री है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो पास है. पर इस साल कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है. जो कन्फ्यूज़न था पिछली बार, कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे पता नहीं लगा 60% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो झंझट इस बार नहीं है. अब एग्जीक्यूटिव के अंदर कोई पे स्केल नहीं है. कंसोलिडेटेड सैलरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है. पहले साल में 29,000, दूसरे में 31,000, तीसरे में 34,000. तो ये भी आपको देख के चलना है कि इसमें लिमिटेड सैलरी है. अब 3 साल बाद क्या होगा, ये भी एक प्रश्न है. 3 साल बाद जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको मौका मिलता है असिस्टेंट मैनेजर बनने का. इंटरनल एक एग्ज़ाम होता है जो आपको पास करना है. काफ़ी संख्या में लोग उसको पास कर लेते हैं. 95-97% लोग हर साल पास करते हैं उसको.
बहुत कम लोग हैं जो नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाते उनको एक्सटेंशन मिलती है एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो जो ये थ्रेट है कि मेरे को निकाल दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ है, आगे होगा नहीं होगा, क्योंकि कंट्रेक्चुअल है तो कोई ज़रूरी नहीं वो कंटिन्यू करे। तो ये रिस्क बना रहता है, बट ये रिस्क कई बार रियल नहीं है क्योंकि एब्जॉर्व कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन बैंकिंग है, उसमें क्या डिसएडवांटेज है ओवर पीओ। पीओ में आप इमीडिएट लग गए, सैलरी मिलनी शुरू हो गई। यहाँ आपको 1 साल कोर्स करना है, कोर्स की फीस भी देनी है 3.5 लाख रुपए। नहीं है पैसे तो आपको लोन भी मिल जाएगा जो आपकी सैलरी से कटेगा। ड्यूरिंग जब आप पढ़ रहे हैं उस समय आपको स्टाइपेंड है, नॉमिनल है, 2,500 रुपये महीना है, पहले 9 महीने 10,000 रुपये महीना है, अगले 3 महीने। तो ये 1 साल आपको एडिशनल लगाना है, इसमें पढ़ाई हो रही है, बोर्डिंग लॉजिंग हो रही है, 3.5 लाख रुपये खर्च हो रहा है। IBPS PO में वो नहीं है। अब अगर नौकरी नहीं लग रही है और 1 साल लगा के पढ़ाई करके नौकरी पक्की हो जाती है तो कोई बुराई भी नहीं है। तो नॉर्मली जब ये कोर्स ख़त्म हो जाता है तो इनको एब्जॉर्व किया जाता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर IDBI की अच्छी सैलरी है, अच्छे पार्क्स हैं। जो आज की डेट में सैलरीज हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उनसे मैचिंग सैलरीज हैं और थोड़ी सी बेटर ही हैं। तो ये एक एडवांटेज है इसके अंदर। IDBI इज़ गुड पे मास्टर, तो अच्छा उसमें सैलरी है। अब ये सैलरी स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, ये कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि प्राइवेटाइज हो गया तो क्या होगा। देखो, इसके बारे में कोई किसी को बता नहीं सकता है और ना किसी को पता है। पर यूजुअली जो आज प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक्स हैं, जो ओल्ड जनरेशन है, जैसे साउथ इंडियन बैंक है, कर्नाटका बैंक है, फेडरल बैंक है, वो वही स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। तो इसलिए ये फियर अभी अनफाउंडेड है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी को क्लैरिटी नहीं है क्या पे स्ट्रक्चर्स रहेंगे आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। पर चांसेस हैं यही कि प्रेजेंट ही कंटिन्यू करते रहें, पर क्या होगा नहीं होगा ये बाद में ही पता लगेगा। सर्विस के लिए बॉन्ड भी है इसके अंदर, ऑफिसर के अंदर 3 साल आपको कम से कम सर्विस करनी है, नहीं तो 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो बॉन्ड भी है, ये भी आपको देख के चलना है। तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे तो इसमें हमने सारे एस्पेक्ट आपके साथ कवर कर लिए, क्या रिस्क है क्या नहीं है। डिसीजन आपको लेना है। अब IDBI बैंक के अफसर की सैलरी क्या है, पार्क्स क्या है, इस पर वीडियो है, वो मैं आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उसका लिंक। कैसे पढ़ाई करनी है सिमिलर है, ऑलरेडी हमारा क्लैरिकल के लिए भी टाइम टेबल चल रहा है, ऑफिसर के लिए भी चल रहा है, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके लिए भी 1-2 एडिशनल भी मैं बना दूँगा और इसके मॉक टेस्ट भी हम आपको देंगे। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया। इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लें, साथ में बैंकिंग सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लें, कूपन कोड अप्लाई कर दें AA03, 10% ऑफ मिल जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी प्लान है एनुअल या हाफ ईयरली, उनको उसी में ये IDBI के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी कवर किया था, इस साल भी करेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया उनको करने के लिए। बाकी डिटेल अभी आ जाएगी और मेरा पूरा मानना ये है कि वो दे देंगे, क्योंकि आज ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप IDBI के मॉक टेस्ट भी दे दें, तो वो प्लान करके बता देंगे। तो इसको आप यूज़ कर लें। कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। मोर और लेस सेम ही है जो हम IBPS क्लर्क और IBPS PO की करते हैं, क्योंकि अब इसमें एक ही एग्ज़ाम है, तो जैसे मेन की तैयारी करते हैं वैसे तैयारी करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, अब इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हो सकती हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में डाल दीजिए, कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर देने की। पर मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास ही है। सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी है, आपने खुद अपने विवेक से, अपने दिमाग से डिसीजन लेना है कि मुझे इसके लिए जाना है कि नहीं जाना है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। कैरियर आपका है, नौकरी आपको चाहिए, आपको खुद फैसला जरूर इसमें करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।